Good morning, student of class 5. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the discussion of MCQ question answer for first term examination. Okay, so let's start. Here you can see the syllabus of first term examination, first 4 chapters which are included in the first term examination. First chapter is evolution of computer, second chapter is types of software, third chapter is MS Word, advanced features, and fourth chapter is more with MS Word. So all of you have to do one thing, please read the chapter, all of this chapter very carefully. Okay, very carefully. So move on to the next part. Here you can see the details about the first term examination. Okay, so we all know that our examination, first term examination is starting from 21st September 2020. Okay, जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 21st सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड द डेट ऑफ कंप्यूटर एग्ज़ाम इज़ 29 सितंबर. ओके, 29 सितंबर को आप लोगों का कंप्यूटर एग्ज़ाम है. ओके, एंड द क्वेश्चन पैटर्न इज़ MCQ बेस्ड. ओके, दैट मीन्स जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा किस टाइप का होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर होगा. ओके, एंड द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ मॉर्निंग 9 AM. दैट मीन्स आप लोगों का जो सुबह 9 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा. आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा पहले ही लॉगिन करके रखना है व्हाट्सएप ऐप में. ओके, ताकि कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लॉगिंग में लेट हो रहा हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा पहले ही व्हाट्सएप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं. ओके, लॉगिन करने से अच्छा होगा. नेक्स्ट इज़ द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द 19 अक्टूबर. ओके, दैट मीन्स जो रिज़ल्ट होगा वो 19 अक्टूबर को डिक्लेयर होगा. ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन. ओके, so you have to note the date of the computer examination 29 September. Okay, so move on to the next. So here you can see the example exam MCQ question answer. First question is question number 11. The world first computer built in 1942, 1943, 1944, 1945. So the option number 3 is the correct answer. The first computer is built in 1944. Okay, next is from this following which is an example of vacuum tube based computer. From this following which is an example of vacuum tube based computer? Apple, ENIAC, laptop, IBM 7090. Okay, so option number 2 is the correct answer. ENIAC is a type of a computer which is based on vacuum tube. Okay, ENIAC जो था उसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था. ओके, नेक्स्ट इज़ सबमिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर. सो सबमिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर. ओके, सुपर कंप्यूटर जो है उसका जो एग्जाम्पल है एक वो है सबमिट. ओके, नेक्स्ट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन MISP, MIPS एंड MPIS. दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर 3 है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसका जो फुल फॉर्म है मिलियन फॉर M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शन, P फॉर पार एंड S फॉर सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. द कंप्यूटर स्पीड of a computer the speed of a computer is measured in million instruction per second. Next is question number 15. A computer can do multiple tasks at the same time. This feature is called, that means a computer can do multiple tasks. Okay, multiple tasks means we can easily work on a document and also playing music at the same time. Okay, so this feature is called multitasking. Okay, multitasking is the right answer. Question number 4, multitasking is the right answer. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ़ यू दैट जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ खाली ये सब क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों को पूरा बुक पढ़ना है. ओके, जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और हर एक लाइन से एक ना एक MCQ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. ओके, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो मुझे आई डोंट नो. दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड दैट प्लीज़ रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना ही है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 16. From this following which is an example of mobile operating system? Okay, from this following which is an example of mobile operating system? First is MS-DOS. MS-DOS is a computer operating system. Mac OS is also a computer operating system. Last option number 3 is Symbian is the mobile operating system. Okay, last option is none of this. So option number 3 is the correct answer. Symbian is the mobile operating system. Okay,
So option number 3 is the correct answer. Next is the language processor convert a high level language line by line. First option is assembler, next option is interpreter, third option is compiler, fourth option is none of this. That means the interpreters converts the interpreters is a processor, language processor who converts a high level language line by line. Okay, line by line. So option number 2 is the correct answer. Next is question number 18. From this following, which is not an example of page margin? Which is not an example of page margin? Landscape, normal, narrow, moderate. So last three option all are the example of page margin. Okay, so landscape is the page orientation part. Okay, we all know that the page orientation part has a two part, landscape and portrait. So landscape is not an example of page margin. Okay, next is the shortcut key to insert a page break. Okay, we use the shortcut key to insert a page break. Control plus S, control plus F, control plus enter, control plus Shift plus V. So right answer is control plus enter. We use the control plus enter key to insert a page break. Next question is question number 20. To insert a shape, click on the shape icon in dash group. To insert a shape, click on the shape icon in dash group. First is table tool group, second option is illustration group, third option is shape style group, and fourth option is none of this. So second option is the correct answer. Illustration group is the correct answer. Okay, to insert a shape, click on the shape icon in illustration group. So these are the mainly sample MCQ question answer from your all chapters, inside the chapters and from the exercise the chapter. But all of you have to do one thing, please read the chapter very carefully. Okay, read the each and every chapter very carefully, and I hope that all of you have already prepared yourself for the examination, first term examination. So I am ending my discussion here. So best of luck for the coming examination. So आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करो खुद को एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक. एग्जामिनेशन सब लोग अच्छी तरह से देना. ओके, सो आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर. सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर.